ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न ही नहीं होती हैं। आज याद करो, कल भूल जाओ। एग्जाम टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। 1045 इज 1 और नॉट, पता नहीं 1/√3 और 3। प्लीज हेल्प मी गॉड, व्हाट आई डू। क्या आप भी ऐसे ही सवालों से हैं परेशान? So don't worry, your mentor Haridev Verma welcomes you on your favorite YouTube channel Maths Can Be Fun. So in this video, I'm going to share the trick which help you to learn trigonometric values on fingertips. I know you are curious to learn the trick. So without wasting time, let's start the video. So I made my right hand palm on board. मैंने अपने right hand का palm board पे बना रखा है. Okay, so let's see how we learn the values. Anti-clockwise, we will find the value of sine theta. Is it clear? And for clockwise, we will find the value of cos theta. First step. Second, for example, I want to find the value of sine 0 degree. So what we will do? We count the number of figures. Now, how we count the number of figures? For example, it is 0 and we know we calculate sine anti-clockwise. अब अगर हम anti-clockwise move करेंगे तो little finger के बीच में बाद में कोई भी finger नहीं है, means 0 finger. Then by 2 and don't forget to put a root. So the root 0 is 0 by 2 and 0 divided by 0 we get 0. So the value of sine 0 is 0. So what we learn? The formula is under root of number of fingers over 2. Is it clear? Now let's we move to sine 30 degree. Just see and practice on your palm. Sine 30 degree, it is 30. Is it clear? And then we calculate sine anti-clockwise, cos clockwise. C stand for cos and C stand for clockwise. Is it clear? So sine anti-clockwise. So how many fingers after 30 is 1, means 30 के बाद में कितनी फिंगर्स हैं? 1 फिंगर है. So हम क्या करेंगे? Sine 30 degree. So sine 30 degree is equals to 1 by 2 and don't forget to put under root. Now the one's under root, the square root of 1 is 1 and 2. So the value of 1 by 2. It is easy or not? Let's we see all values on fingertips. So cos sine 45, let's we move to the sine 45. How calculate the value of sine 45 on fingertip? So sine 45 is equals to, so we are on 45 now. How many fingers after 45 in anti-clockwise direction? 1 and 2 fingers. अगर आपको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इतनी सी बात याद रखो, साइन को इस तरफ कैलकुलेट करेंगे, कॉस को इस तरफ कैलकुलेट करेंगे. अब साइन 45 निकालना है. साइन 45 इस तरफ निकलेगा. कितनी फिंगर्स हैं? 2. ओके, सो 2 by 2 and don't forget to put under root. Then what we will do? We will rationalize by root 2. Then this 2 will cut these two roots. Then what we get? 1 by root 2. This is the value of sine 45 degree. Are you getting? समझ में आ रहा है? आ रहा है. So don't forget to like the video and share with your friends. Okay. Then similarly at the same time I'm going to find the cos 45 as well. Okay. ये भी देख लेते हैं. So cos 45. So it is 45 degree. cos के लिए हम इस तरफ देखेंगे. कितनी फिंगर्स हैं? 1 and 2. It is clear? Now 2 fingers, number of fingers divided by 2
and again I'm repeating, don't forget to put under root in numerator. Then rationalize. Now this 2 will cut these two roots, so what we will get? 1 by root 2. So cos 45 is also 1 by root 2. Sir, it is typical, हम सारी values लिखेंगे क्या? Yes, because I am explaining. That's why I am going to write all the values. मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैं सारी वैल्यूज लिखूंगा, बट एग्जाम टाइम पर आपको जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो आप उसको फिंगर टिप से निकाल लीजिए. ओके, नेक्स्ट. सो इस तरह से हमें वैल्यूज के लिए टेंशन नहीं लेनी है. इट्स क्लियर? यस. नेक्स्ट, साइन 60 डिग्री. सो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री. साइन इस तरफ कैलकुलेट करेंगे. हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 1 2 3, 3 फिंगर्स थी. सो 3 by 2, don't forget to put root. Root 3 by 2 is the value of sine 60 degree. It's clear? Next, sine 90 degree. Sine 90 degree is equals to, this is 90. साइन की वैल्यू इस तरफ कैलकुलेट करते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, साइन की वैल्यू इस तरफ कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 1 2 3 4 fingers. So we put 4 by 2 and don't forget to put square root on numerator. Square root of 4 is 2, then 2 by 2 it will cut, we will get 1. So the value of sine 90 is 1. Next, we fill the cos. So cos 0 degree, cos 0 degree is equals to, this is 0. okay, then we know very well cos के लिए हम इस तरफ फिंगर्स काउंट करेंगे. so 1 2 3 4. so we will put 4 square root and 2. Square root of 4 is 2, 2 divided by 2, then we will get 1. so the value of cos 0 is 1. Then next value, cos 30 degree. Cos 30 degree is equals to, cos 30 degree, this is 30. okay, how many fingers in this direction? why? because cos को इस डायरेक्शन में है. ठीक है, साइन को इस डायरेक्शन में. इट इज क्लियर? now so cos 30 degree, so how many fingers are there? 1 2 3. so we take 3 under root by 2. okay, है ना easy bill? it's easy like ABC. next, cos 60 degree. cos 60 degree is equals to, this is 60. okay, cos को कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह वाली फिंगर कितनी बची है? एक. means we'll write 1 under root by 2. square root of 1 is 1 by 2. so the value of cos 60 degree is 1 by 2. next, cos 90 degree. cos 90 degree is equals to, cos 90 degree, it is clear, it is 90. how many fingers? no finger is left, so it means no finger. under root by 2. square root of 0 is 0, 0 by 2 we get 0. so the value of cos 90 is 0. it is clear? yes. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो cos एंड sin की, सो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल थोड़ी ना बनानी एग्जाम में. नो नीड टू मेक अ टेबल इन एग्जामिनेशन. ओके, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर पाम. साइन 45 डिग्री. ठीक है, आप 45 पर आए, साइन कैलकुलेट करना है, आपने इस तरफ वाली फिंगर्स कैलकुलेट करी, 2 फिंगर्स हैं. ओके, देन 2 अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2. इट इज क्लियर? next we move how to learn all these remaining values. tan theta, tan theta is equals to sin theta upon cos theta. then we know the value of sin theta and cos theta. means अगर हम sin 0 की वैल्यू बोले तो वो भी पता है, cos theta की वैल्यू बोले तो वो भी पता है. okay, then sin theta, so I'm going to find the value of tan 0 degree. so tan 0 degree means first of all sin 0, sin 0 is 0 upon
cos 0 is 1, and when we divide 0 by 1, so we get 0. So the value of tan 0 is 0. The value of tan 0 is 0. Similarly, tan 30 degree. Tan 30 degree is equals to value of sin 30, 1 by 2. Okay. Upon cos 30 degree, root 3 by 2. This 2 cuts this 2. What is left? 1 by root 3. So the value of tan 30 degree is 1 by root 3. Next, tan 45. So tan 45 is equals to sin 45. So value of sin 45 is 1 by root 2 upon cos 45 is again 1 by root 2. We will cut the root 2. So we will get 1. So the value of tan 45 is 1. Then tan 60 degree. Tan 60 degree is equals to sin 60 degree is, what is the value of sin 60 degree? Root 3 by 2. Okay. Upon value of cos 60 degree is 1 by 2. This 2 will cut this 2. Then what we will get? Root 3 by 1 means root 3. Next, tan 90 degree. So how to find the value of tan 90 degree? It's easy. Like ABC. So tan theta means sin theta, or we are finding the tan 90. So we'll put the sin 90's value. Sin 90 is 1 by, and cos 90 is 0. It is defined? No. It is undefined. It is undefined. That's why cos tan 90 is undefined. Okay. Means, अच्छा इस कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं. 1 by 0 is undefined and 0 by 1 is 1. Why? Sorry, 0 by 1 is 0. It's a slip of. Okay. How? Means 0 is the multiple of 1. 0 1 का मल्टीपल है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं. या फिर हम ये बोले क्या 0 1 से डिविजिबल होगा? Yes. 1 zeros are 0. 1 zeros are 0. That's why 0 divided by 1 we get 1. 0. Sorry. Okay. 0 divided by 1 we get 0. Then 1 divided by 0. Is it possible to get 1 in the table of 0? 0 1s are 0. 0 2s are 0. 0 10s are 0. Means 0 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आएगा. तो इस सिचुएशन में लोग क्या बोलते हैं? इट इज अनडिफाइंड. इट इज क्लियर. नाउ कॉसेक थीटा. अब कॉसेक की वैल्यूज को फिल करते हैं जल्दी से. ठीक है. और आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे. अच्छा, tan की वैल्यूज लर्न करने का एक तरीका मैं ये भी बता दूं. tan 0 0. इट इज क्लियर. देन tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लर्न रखो बस. 1 by root 3. tan 30 1 by root 3. tan 30 1 by root 3. ओके. देन न्यूमरेटर जो उसका होगा वो 45 की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर होगा वो उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू मींस 60 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी. इट इज क्लियर. नाउ एंड द लास्ट वन इज अनडिफाइंड. देन वी नो दैट sin is the reciprocal of cosec and cosec is the reciprocal of sin as well. So for example, I want to find the value of cosec 30 degree. So cosec 30 degree is equals to 1 by sin 30 degree. Means we just write the reciprocal of sin 30 degree to get the value of cosec 30 degree. So the sin 30 degree is 1 by 2. So 1 by 2, it means 2 is the value of cosec 30 degree. तो हम देखिए इसको कैसे फिल करेंगे. 0, reciprocal of 0 means cosec 0 is equals to 1 by sin 0 degree. Then 1 by sin 0 is 0, and this situation is undefined. Undefined. Okay. Now तो अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है. अब हमसे पूछा गया cosec 45. cosec 45 पूछा गया, तो हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे. साइन की वैल्यू इस तरफ कैलकुलेट करते हैं. रूट 2 by 2. रूट 2 by 2. It is clear. Then rationalize. Then we will get 1 by root 2. Okay. Sin 45 is 1 by root 2. So cosec 45 is root 2 by 1. Reciprocal of sin 45. Root 2 by 1 means root 2. Okay.
नाउ तो अब हम इनकी वैल्यूज को डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो इट्स बिकम 2/1 मींस 2. Reciprocal of sine 60 degree, to find the value of cosec 60 degree is 2 by root 3. Again 1, and the reciprocal of 1 is again 1. Next, so let's sec 30 degree. Sec 30 degree is to 1 upon cos 30 degree. So what we will do, 1 upon cos 30. So the value of cos 30 is root 3 by 2. Root 3 by 2. So we can just reciprocal this. So it will come 2 by root 3. So the value of sec 30 is 2 by root 3. मीन्स यहां से टाइम नहीं वेस्ट करना. देखिए इसका जस्ट रेसिप्रोकल है तो हम सबका रेसिप्रोकल लिख दें. तो 1 का रेसिप्रोकल 1. Reciprocal of 1 by root 2 is root 2. Reciprocal of 1 by 2 is 2, and the reciprocal of 0 is undefined. Okay, next, cot is the inverse of tan, so it is 0. So the reciprocal of 0 is undefined. Then 1 by root 3 means root 3. 1 reciprocal is 1. Root 3 reciprocal is 1 by root 3. And how we will get undefined? Undefined की situation कब होती है? 1 by 0 is undefined. 1 by 0 is undefined means 1 by 0 is giving undefined. So हम क्या करेंगे? So reciprocal of 1 by 0 is 0 by 1. So what we will get? We will get 0. So the value of cot 90 degree is 0. So this is the way to learn the trigonometric values on your fingertips by only sine and cos. So कैसा लगा ये वीडियो? Don't forget to share this video with your friends, and if you're not like the video, so first of all like the video and subscribe my channel. Maths can be fun.